So starting surds here. Surds जब हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखेंगे तो बेसिकली वहां पे फिर हम उसको सर्ड्स कहते हैं। और फिर सर्ड्स को अप्लाई करने के लिए ज्यादातर ये होता है कि आपके पास प्लस या माइनस की टर्म्स होती हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिविजन, राइट? सो मीनिंग इफ यू हैव √5 × √6, ठीक है, अब दोनों का भी जो नंबर जो रेडिकल है दैट्स अ स्क्वायर रूट. So simply you can say that it can be written as a 5 times 6, square root of 5 times 6, which gives you a 30. ठीक है, अब 30 के साथ sometimes अगर मैं 30 का LCM ले लूं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आई नीड टू हैव अ पेयर. एंड व्हाट आई कैन सी इज कि 30 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2, 3 और 5 हैं, राइट? नन ऑफ देम इज देयर as a pair, right? So my answer in this case is just going to be a root 30. It's not going to change here, correct? Oh, yes. Okay, you have square root of 2 into square root of 72, right? So here you can say that this needs to be 2 times 72. ठीक है, अब या तो मैं इसका completely मैं इसको solve कर लूँ या फिर मैं सिर्फ 72 के अगर factors find करती हूँ. So the factors of 72 here, they are going to be 2 and a 36. Then it's going to be 2 and an 18. Then it's going to be 2 and a 9. And then it's a 3 and a 3 here. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे pairs नजर आ रहे हैं. So whenever we have square root, pairs are very, very important. Reason क्या होता है? Reason ये है कि अगर आपके पास सिर्फ square root of maybe 9 दिया हुआ है ना, तो you can say that this 9 is written as a 3 square. और हमें पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर both of them they will get cancelled, or in other words I can say it's a 3 square. स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 है. this 2 gets cancelled and the answer is just a 3 here. ठीक है, तो that is why I'm saying कि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे, go for pairs. Whatever the number which is there is making a pair, just write it outside the radical sign. ठीक है, मीनिंग यहाँ पर जो मेरे पास आंसर होगा, if I just write the multiples of 72, then I can say that this is a 2 and then a 2 and then a 2 again and then a 3 and a 3. ठीक है, अब कितने pairs बन रहे हैं? I'm getting a pair of 2 here, I'm getting a pair of 2 here, and then it's a pair of 3 also. तमाम पेयर्स को मैं विदाउट रेडिकल लिख सकती हूँ as a 2 and then again a 2 and then again a 3. So what is going to be my answer? It's just going to be a 12 here. Got it? Is that clear? Yes. Yes. चलो, अच्छा, अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी एक चीज थी जिसमें हमने स्क्वायर रूट लेना चेक किया था, देखा था कि हम स्क्वायर रूट किस तरह से ले सकते हैं. What if they have given you a question which says it is square root of 12 divided by square root of 3. अब दोनों भी square root के साथ हैं. So if that is the case, then I can simply say that basically it is square root of 12 divided by 3. And then I can say this is square root of 4. And what is square root of 2? Square root of 4, that's just a 2, and 2 is going to be your answer. Correct? Yes. Right? अच्छा, मैंने बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट किया है. स्क्वायर रूट ऑफ 120 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 24. ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 24. ऐसा ही है. Yes. Now can I start simplifying it? This becomes a 60 and then this becomes a 12. Further, I can say this is 12 ones and then 12 fives are. That means I'm just left with a square root of 5. Square root of 5, Zaire, 5 is not a perfect square. So my answer here is just going to be a square root 5. That's just going to be my answer. Any problem? No. No. So आप लोग अब ये सवाल मुझे करके बताएं. It's 9 square root of 20 divided by 3 square root of 5. ठीक है, जो नंबर स्क्वायर रूट में हैं आप उसको अंदर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं. लाइक यू कैन से it's 9 divided by 3 times square root of 20 over 5. Give me the answer. First,
I divided 9 by 3 and I got a simple 3. Mhm. Then I combined both of the radical signs and got under root 20 upon 5. Mhm. What is that? That's a 4. And because we know that under root 4 is 2, so 3 into 2 is 6. Yeah. So this is 3 into 2, that equals a 6. Umema, is this your working also? Yes. Right. Acha, what is to simplify square root of 200? Okay, I just want you to simplify square root of 200. What should I do? What should be my first step to get square root of 200? Take LCM. Take LCM. So you have a 200 here. If I start taking the LCM, then this becomes a 2 and 100, right? What should be next? 50. 50. What should be next? 25. Right. And then Then a 5 and then a 1. 5, 5, and then a 1. Right? 2 times 5, and then we have a 1. Chale, what should be my answer? I'm continuously saying I have to have a pair, right? Where am I getting a pair? This is my pair. This is my pair. Why do I need the pair? Because then I could write this pair 1. Cancel with the under root. Yeah, आंसर विल बी विदाउट अंडर रूट राइट 2 और 5 जब हम लिखेंगे तो हम एक दफा लिखेंगे और वो भी विदाउट अंडर रूट लिखेंगे सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर इट शुड बी अ 2 टाइम्स 5 और फिर एक है 2 जो कि रह जाता है सो आई जस्ट राइट इट विद द रेडिकल साइन एंड माय आंसर इज गोइंग टू बी 10 रूट 2 इज दैट क्लियर Yes. ठीक है चलें अब मुझे जल्दी से आप लोग करके दिखाएंगे फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 90 quickly. ठीक है वर्किंग पूरी एलसीएम के साथ बिकॉज यू नो इंडाइसेस हो या फिर सर्ड्स हो जब ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वेरी क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर सो व्हेन इट सेज विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर तो इसका मतलब है कि आपको तमाम वर्किंग शो करनी है अदरवाइज अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर में आंसर फीड करो क्वेश्चन फीड करोगे यूल गेट द आंसर but then if they are saying that you have to solve it without the use of calculator, so it means आपने एक step show करना है, अपनी working को justify करना है. So you have to show clear working. So if I'm saying take this LCM, then obviously you have to show the factors to solve only square root of 90. ठीक है चलें जल्दी से कर लें what is your answer? Ma'am, is it 3 under root 10? Yes. Umema? Yes, I'm going 310. चलो उमैमा आप मुझे इसके factors बताएं जल्दी जल्दी क्या factors 3, है? 3 with 30, and then another 3 with 10, and then 2 with 5, and 5 and 1. Okay. That is 3.5, that's the 10, so this is 60, square root of 10. Any problem? No. Done? Then we'll keep 3 out of the We'll keep 3 outside the radical sign and this becomes 3 square root of this is then your answer. है ना? ठीक है एक और सवाल आप लोग मुझे करके दिखाएं क्वेश्चन 8 है which is square root of 245 times square root of 5 ठीक है बिफोर सॉल्विंग मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या आप पहले इसको 245 into 5 करेंगे या what is going to be the mind mapping? I want to know how you are going to start solving this question, simplifying this question. Anyone can answer here. We'll take the LCM of 245. Yes, take the LCM of 245.
That is the answer, 35. 35, yes. What is square root of 245, Alia? Yes. What is square root of 245? I took its LCM and I got 7 square into 5. So that's 7 into 5. Yeah, 7 root 5 into root 5, Yes. right? And then root 5 into root 5, that will give you just a 5. And your answer is going to be 35 here. ऐसे ही है? Yes. चलें। तो मैम आपकी भी वर्किंग ऐसे ही हो रही है? Yes. Starting the next question, it says, find out the square root of 125 plus square root of 80. ठीक है, अब यहाँ पर I can see that I have this plus sign. अब चाहे यहाँ पे plus sign हो या minus sign हो, हमें जो दोनों terms हैं उनको separately solve करना होगा. ठीक है, so if I solve the two terms separately, what I know is if I start taking the LCM of 125, then this becomes a 5 and a 25, and then this is a 5 and a 5, and then it's going to be a 5 times 1 here. So I do have a pair. That pair is representing a 5. So I can say that root 125 can be written as 5 root 5. Okay, the same thing I will be doing for 80. I'll take the LCM of 80. This becomes a 2 and a 40, 2 and a 20. Then I should be having 2 and a 10. Then it's a 2 and a 5. And then 5 times 1. So pair, this is a pair, this is a pair. 5 is without the pair. I'll just write it once, write it once. So this becomes a 4. So can I say that this is a 4 root 5? Correct? Yes. ठीक है, और उसके बाद root 5 and a root 5, that's a common, right? So whenever you have a common, what you do is just add the coefficients. Just add, it's just like अगर आपके पास 5x plus 4x दिया हुआ होता है, तो what do you say? You say that this is going to be a 9x. ठीक है, so just in place of x अगर आपके पास root of 5 लिखा हुआ है, so you'll just say that this is going to be the addition of 5 and 4, which gives you a 9, and then root 5 common. और इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि इस टर्म से हमने रूट 5 कॉमन कर लिया और यहाँ पर आपके पास 5 plus 4 रह जाता है, which just gives you a 9 root 5. ठीक है, so I have tried to explain it by all the means that I know. Understood? I hope there is no problem. अब इन सब के जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे होते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे पास जो रेडिकल है, जो सर्ड है, वो सेम हो जाए, ताकि हम प्लस या माइनस की टर्म्स को मजीद सिंप्लीफाई कर सकें. सो यू हैव सीन हियर दैट वी हैव अ रूट 5 व्हिच इज अ कॉमन फॉर बोथ द टर्म्स. मैंने आराम से दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, एंड देन आई गॉट द आंसर हियर. एनी प्रॉब्लम? No. Okay. What if I say that you have root of 75 plus 2 root 3? ठीक है, अब जाहिर है रूट ऑफ 75 है, रूट ऑफ 3 है, दोनों डिफरेंट सर्ड्स हैं, मैं इनको ऐड नहीं कर सकती. So what I will do is I will again take the LCM of 75 and I'll bring it and simplify it, try to simplify it so that मेरे पास आंसर रूट 3 के फॉर्म में रह जाए, ताकि फिर मैं उसको मजीद सॉल्व कर सकूं. So get the multiples of root 75 quickly. What is it? 3, 5, and 5. What did you say? The multiples of 75 are 3, 5, and 5, so we can break it into 5 under root 3. Yes, so this becomes a 5 root 3 and then this becomes a 2 root 3. So what is your answer? 7 root 3. 7 root 3. Okay, so was it difficult? No. No. चलो, अब terms हम थोड़े से ज़्यादा कर लेते हैं, and the terms are 5 root 12 minus 3 root 48 and then it's a plus 2 root 75. ठीक है, अब यहाँ पर root
12 है, रूट 48 है, रूट 75 है, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. दैट मीन्स आई विल बी टेकिंग द एलसीएम ऑफ 12, I will be taking LCM of 48, I'll be taking LCM of 75. Simplify and see if your surd becomes a common. चलें जल्दी से. हाँ जी, is it done? Yes. Okay, so what is root 12? Root 12 is 2 under root 3. Okay. So root 48, 4 under root 3. okay, and 75, 5 under root 3. 5 under root 3. Okay. Meaning I have a root 3, I have common here. Root 3 here, root 3, and then all the terms they have simple root 3 now. So this becomes a 10 root 3 minus a 12 root 3, and then this becomes a 10 root 3 again. So what is going to be the final answer? 8 root 3. 8 root. Yes, Alia, you're getting the same answer? Yes, ma'am. Okay. So ये हो जाएगा, कोई problem? No. एक और सवाल इसका कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं. दिस इज फॉर रूट 80 प्लस 2 रूट 20 एंड देन प्लस 4 रूट 45. ठीक है, चलिए हम जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं. Okay, you give me this explanation. What is root 80? First, we have 4, we convert under root 80 into 4 root 5. Okay, Then 2 under root 20 will be converted also into 4 root 5. okay. And 4 root 45 will be in 12 root 5. And then what is the final answer? 20 root 5. 20 root 5. So, Mama, what about you? Yeah, 20 root 5. 20 root 5. What was your working? The same. I converted 80 into 4 under root 5, 2 into 4 under root 5, and 4 under root 45 into 12 under root 5. 45 के क्या factors आ रहे थे? 5, 3, and 3. 5, 3 and 3. ठीक है. So 5, 3 and 3 का मतलब है आपने एक 3 को common कर लिया and that 3 got multiplied by 4 giving you a 12 root 5. Isn't that so? Yes. Good. चलो. अच्छा, अब next concept that is for to expand and simplify, right? So जिस तरह basic algebraic expressions आपके पास होते हैं और फिर आप उसको expand करते हैं, we are going to do the same thing here. And to do that, simply आपको basic expansion, algebraic expansion आनी चाहिए है. So you need to expand here. ठीक है. So here, if I give you this question, which is root 5 times 2 root 5 and then plus 20 square root of 20. ठीक है. So simply what you need to do here is कि जो root 5 है, obviously that root 5 here, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. It will remain the same. Root 5 here,
अगेन कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज √5 के फैक्टर्स और कोई है ही नहीं. But with this as a 20, I can write this 20 as a 2 and a 10 and then 2 and a 5. So I can say that root of 20 can also be written as a 2√5. ठीक है, अब ये सब करने से क्या हुआ, पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास √5 के फॉर्म में आ जाएगी. Meaning here I can say this is √5 and then this is 2√5 plus 20, which can be written as a 2√5 again. ठीक है, and then again for the bracket I know that I have a √5, I have a √5, which means I can simply say that this is √5 times 4√5. Agreed? Yes. Yes. Okay, अब ये √5 और √5, the two √5s, when two roots they get multiplied with each other, always remember if you have root a into root a, then the answer is just going to be an a. है ना? वजह क्या है? The reason is this becomes a square, or square root of square they get cancelled and you are left with an a. ठीक है? Meaning here if you have two square roots within of the same number, then you can just say that this is going to be 4 times 5 and the answer is going to be a 20. Understood? Yes. Yes. Okay. So let's do one more example. And अच्छा अब इसमें इन examples में algebraic identities बहुत important हैं. ठीक है? Like if you have a 3 minus √2 and if you have a 3 plus √2. ठीक है, what I can see here is that basically ये जो form है ये algebraic identity a minus b or a plus b का है. Anyone remembers what this identity represents? What is a minus b and a plus b? A square minus B square. Yes, this is a square minus b square. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी जैसे ही आप देखते हैं कि आपके पास सेम टर्म्स हैं but the second term is with opposite signs plus and minus, always remember you have to apply the identity. करने को हम इसका complete expansion भी कर सकते हैं but obviously identities अगर पता हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, it becomes more easier. So a minus b and a plus b, my a value is a 3 and my b value is a √2. So can I say that here I have a 3 squared minus √2 the whole square, which becomes the 9, or cancelled, you are left only with the 2 and your answer becomes a 7. Is that okay? Yes. Yes. Okay. So what if we have, maybe it's a 2√5 minus a 3 and 2√5 plus 3. Okay, again, is it following the identity a minus b and a plus b? Yes. Should I simply say that this is 2√5 the whole square minus 3 the whole square, Yes. right? What is 2 square? 4. And then √5 the square? 5. 5. And then what about 3 square? That's a 9. So basically you are left with 20 minus 9 and your answer is just going to be an 11. Correct? Yes. Yes. So again repeating a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. जब हम सर्ड्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह पर दिस आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, हम इसकी एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लाइक इसको हम एक्सपेंशन के साथ भी कर सकते हैं बट वी डोंट वांट टू डू दैट. क्यों? बिकॉज सारा मसला ही टाइम का है. एग्जाम में हो सकता है बहुत कुछ आपको आता हो, अगर आप उसको बहुत लंबे मेथड के साथ कर रहे हो जिससे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. वी डोंट वांट टू डू दैट. वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम. We do not want to penalize ourselves by losing the time there. So identities पता होनी चाहिए. ठीक है, दूसरा मेथड जो एक्सपेंशन का है मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैं एक्सपेंशन का क्या मतलब है. एक्सपेंशन का मतलब है कि the same equation I can say it's 2√5 times 2√5 plus 3 and then minus 3 और फिर मैं वापस इसको इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ. ठीक है, don't you think it's going to take longer? It is, right?
Yes. ठीक है ना? तो फिर हम क्या लिख, yes, so you're saying something? आलिया आप कुछ कह रही थी? No, nothing, ma'am. ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए हैं, ठीक है, Yes. राइट? अच्छा, व्हाट इफ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, और ये अब आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे. दिस क्वेश्चन इज फॉर 7√3 + 5 and 7√3 and a -5. चल जल्दी से सॉल्व करके दें. Ma'am, the answer is 122. Good. The answer is 122. Yes, Alia. Yes, ma'am, it's 122. Same. Sure. But if you have 3 + 2√2 and there is another bracket which is 5 + 2√2, अब क्या करेंगे? Can I still apply the identity a² - b²? No. हाँ, अब क्या करना चाहिए? We can take 2√2 common. नहीं ले सकते 2√2 कॉमन. There are two different brackets. ऐड नहीं हो रहे हैं. We have brackets. Brackets का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Oh. हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे मैं कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज द टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है. 2√2 तो कॉमन है. आई कैन सी दैट 2√2 इज कॉमन हियर, बट द 3 and the 5 दे आर नॉट कॉमन, है ना. तो जब ये कॉमन नहीं है, ये सेम नहीं है, तो अब इस केस में मुझे इसको एक्सपैंड करना ही होगा. मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा बाय multiplying 3 by the second bracket, which is 5 + 2√2, and then multiplying 2√2 plus 2√2 by the second bracket, which is 5 + 2√2. Okay, so what is going to be the answer? 15 plus 6√2, correct? Yes. Second, 2√2, Plus 10√2. and then Plus 8. plus 8. Okay, I'm saying it's okay, so 2 times 2, that's a 4, and then √2 into √2, that's a 2, so this becomes an 8. ठीक है. अब like terms को हमें solve करना है. 15 plus 8. What is 15 plus 8? 23. And then what about 6√2 plus 10√2? 16√2. 16√2. Okay. So this then becomes your answer. सही. Yes. अब हम जो question solve करेंगे, they are going to be with respect to the identity, which says this is a plus b the whole square, which should be equal to a² plus 2ab and then plus b². Okay, and I can do the same for a minus b the whole square. A minus b the whole square is going to be a² - 2ab plus b².
ठीक है, अब ये दो आइडेंटिटीज, अनदर आइडेंटिटीज दैट वी हैव हियर, पहले हमने किया था आइडेंटिटीज a plus b and a minus b which is equals to a squared minus b squared. Second is a plus b the whole square which is a square plus 2ab plus b squared. And then we have a minus b the whole square which is a square minus 2ab plus b square. अब इनको हमें किस तरह से अप्लाई करना है? If they have given us 4 plus 5 root 3 the whole square, ठीक है, और मुझे इसको simplify करना है. So how will I do that? I can say that this is basically regarding A and then regarding B, and it's with the positive sign here. So if this is with the positive sign, then obviously I will be using the identity, which is a square plus 2ab plus b square. So can I write this as a 4 square plus 2 times a, which is a 4, b, which is a 5 root 3, and then I should be having 5 root 3 the whole squared. सही है? Yes. Okay, so what about 4 Yes. squared? What is 4 squared? 16. 16 plus, give me the answer for the second term. 40 root 3. 40 root 3, and then what about the next term? 25 root 3. No, 25 into 3, which is 75. 75, ठीक है, now what? We'll add 75 with 16, Okay, and we'll get 91 plus 40 root 3. 91 plus 40 root 3. So this is then going to be your answer. Any problem here? No. No? Any problem? No. No? Acha. What if I give you, let's say it's 4 root 2 plus 5 root 3 the whole squared. Should I again apply the identity a square plus 2ab plus b square? Yes. चलो जल्दी से अब सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं. What should I write for the first term? 4 root 2 whole square. Okay, what is 4 root 2 whole square? It's 32. Right. Next term, 2 into 4 root 2 into 5 root 3. and next, That will be 5 root 3 whole square. चलें. Solve करें 2 into 4 into root 2 into 5 root 3. Ma'am, is the answer 107 plus 40 root 6? अच्छा मैंने अभी पूरा किया नहीं है. I was waiting for this answer. 25 times 3, that's a 75. Is this what you were getting earlier? Yes. Right. And then is this 107 plus 40 root 6? Yeah. Right. ठीक है. So this is done, no problem. Now if I give you 5 minus root 3 the whole squared, ठीक है, अब ये कौन सी identity apply हो रही है? A There is minus B whole square. a minus b the whole square. So a minus b the whole square is a square minus 2ab and then plus b square. A minus b the whole square equals a squared minus 2ab and then I have a plus b squared. Meaning here, can I say that this is a 5 squared minus 2 times 5
times root 3, and then it should be root 3 the whole squared, right? चलें solve करें. 5 squared, that's a 25 minus 10 root 3 and then plus 3. So I'll be left with 28 minus 10 root 3. Okay, can I simplify it further? It's a 28 minus 10 root 3. Can I simplify it further? ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है तो हमें सिंप्लीफाई लास्ट स्टेज तक करना है. इट हैज टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म. 28 minus 10 root 3. Can I simplify it? No. Why not? 28 and 10. 28 and 10. I can take 2 common. I'll be left with a 14 minus 5 root 3. Oh. कर सकते हैं ना? तो जहाँ पे हम कर सकते हैं वहां हमें कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करना है. पिछले क्वेश्चन से मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था क्योंकि हो ही नहीं सकते. 91 and 40 we can't. There are no common multiples या common factors. 107 and 40 again no common factors. ठीक है ना? डन. Yes. चलें, एक और सवाल और वो आप लोग मुझे करके बताएंगे जल्दी से. I'll be waiting for your answer. Let's say it is 2 root 3 minus root 7 the whole squared. चलो, give me the answer. Give the answer करें, मैं आपको next question ready करती हूँ. Got the answer? Yes. What is it? 5 minus 4 under root 21. 5 minus And I'm Yes. getting 19 minus 4, 21. चलो चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हो रही है. Now you should say this is 2 root 3 the whole squared, and then it's minus 2 times 2 root 3 times root 7. ठीक है? And then it should be positive root 7 the whole squared. ऐसा ही है? Yes. Right? That this becomes a 4 times 3. ऐसा है? Is that so? Yes. Right? And then this becomes a 4 root 21, and then this becomes a 7. Right? So it Yes. should be a 12 minus 4 root 21 and then plus 7. So this is a 19 minus 4 root 21. So whose answer is correct? Fine. Yours. Mama? Yeah, I made a sign error. यहाँ पे आपने sign mistake किया. G. So what was the identity? A square minus 2ab plus b square. अच्छा, अब ये इसके साथ मसला यही होता है. इस आइडेंटिटी में नंबर टर्म नेगेटिव है, तो थर्ड टर्म इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, थर्ड टर्म नीड्स टू बी अ पॉजिटिव. इट्स जस्ट दैट द सेकंड टर्म हियर minus 2ab इसके साथ नेगेटिव साइन है. बाकी सारी टर्म्स, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, ये सब पॉजिटिव है. जब हम बाइनोमियल करेंगे ना तो फिर इसकी भी रीजनिंग मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगी तो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है. अभी तो सिर्फ इस लेवल पे ये है कि ये 3 आइडेंटिटीज हैं और इन 3 आइडेंटिटीज को आपने याद करना है. ये 3 आइडेंटिटीज बस आपको पता होनी चाहिए हैं. ठीक है? Got it? Yes. I'll give you one more question.
ताकि मुझे अंदाजा रहे कि अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। आई होप सो। So this is going to be, let's say, 5 root 2 minus maybe a root, um, let's make it root 8 the whole square. ठीक है, अब रूट 8 है, सो जस्ट बी केयरफुल कि रूट 8 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट 8 कैन ऑल्सो इज द नंबर विच कैन बी सिंप्लीफाइड। तो या तो पहले उसको सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो, बट इट नीड्स टू गेट सॉल्व। Ma'am, is the answer 18? Okay, your answer is 18. I'll wait for Umema's answer. Yes, I'm also getting 18. राइट। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है, अब इस सवाल को कराने का मकसद क्या था कि जरूरी नहीं है कि आंसर आपका सर्ड फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, बात सिर्फ नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसका सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का ये भी था कि मुझे हर वक्त आप लोगों ने क्या आइडेंटिटी अप्लाई की है? Yes. Yes. ठीक है, अब वही लकीर के फकीर बन गए ना, कि बस वो जो दिमाग में एक काम कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं। जबकि मैंने पहली चीज क्या कही थी? मैंने कहा था आई हैव गिवन यू रूट 8, आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रूट 8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती तो आई वुड हैव गॉटन 2 रूट 2। ठीक है, 2, इजंट इट अ 2 रूट 2? Yes. राइट। अब क्या हो रहा है? 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, what are you left with? You are left with 3 root 2 the whole square, isn't it so? Yes. Right, what is the answer? 9 times 2, and this answer is going to be 18. अब इस केस में मुझे बताओ, क्या आइडेंटिटी लगाना ही जरूरी था? No, ये मैथड ज्यादा ठीक है ना। अब प्लीज इसमें इन चीजों का ख्याल रखा करो कि अब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें अगर आप मतलब आइडेंटिटीज के साथ जो क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, मतलब मैं अगर बिल्कुल स्टार्ट से देखना शुरू करूं, आइडेंटिटीज हमने यहाँ से देखी थी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही। Yes. राइट, तो जब प्राइम नंबर्स है ना, तो फिर तो डेफिनेटली आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करना ही करना है। बट देन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई सेड 5 रूट 2 माइनस रूट 8, इज 8 अ प्राइम नंबर? No. नहीं, मतलब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो व्हाट वाज आई गेटिंग? आई वाज गेटिंग अ 2 रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, आई कैन सिंप्लीफाई एंड आई कैन गेट द आंसर। सो दिस वाज मोर डायरेक्ट, इजंट इट सो? अब एक ही चीज को आप करना चाहें तो आप आइडेंटिटीज के साथ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने कर ही लिया, यू वर गेटिंग द सेम आंसर 18, बट अगेन रिपीटिंग, उसमें कभी कभी भी क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि आपने इसको आइडेंटिटी के साथ ही सॉल्व करना है, वो नहीं लिखा हुआ है। दे आर जस्ट सेइंग एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, दे जस्ट से दैट सिंप्लीफाई, एक्सपैंड, दैट्स इट, गेट द आंसर। मेथड आपने खुद सोचना है कि मैं यहाँ पे कौन से मेथड के साथ बहुत जल्दी इसको कर सकती हूँ। सो व्हाट वाज द ट्रिक? अगर तो ये
प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ट्राई टू सॉल्व इट, हो सकता है कि ये इसी तरह सॉल्व हो जाए। हो गया ना? हुआ कि नहीं? हो गया। Alright. तो अब what is the lesson that we have done? हमेशा एक ही रूट को फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकली भी देख लो कि क्या जरूरी ही है कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, राइट? यस। तो एक बहुत ही रैंडम प्रश्न था, मैंने अभी ऐसे ही दे दिया। अब लेट्स सी कि अगर आपके पास ये है तो आप इसमें क्या करेंगे। लेट्स से इट्स 68, चलो द होल स्क्वायर। So are you simplifying square root 68 first? Yes. यस। What is your answer? 2 root 17. Yes. Okay, अब यहाँ पे क्या हुआ? You are getting 7 root 3 minus 2 root 17 and this is the whole square. मैं इसको simplify नहीं कर सकती। अब ला महाला I can see कि square root 3 है which is a prime number, square root 17 है which is also a prime number. So what do I need to do? How am I going to expand it? I have to use the identity. By using the identity. Which identity? A, A square minus हाँ? A minus B whole square. A minus b the whole square, which is a square minus 2ab and then plus b squared. चलें जल्दी से अप्लाई करें and give me the answer. Now I'm getting 215 minus 28 under root 51. 215 minus 28 under root 51. Umema, Yes, I'm getting the same. same answer. Okay. So is it clear? Yes. चलें अब now we'll start with word problems. Okay, now they are saying find the value of AC square. So I can see that a triangle is given to us. This is the triangle given. They are saying find the value of AC square. It's a right angle triangle. Okay, AB is the height, which is a 9 root 3. BC is the base, which is a 5 root 2, and AC is your hypotenuse, correct? 90 degrees के opposite जो भी side होती है, that becomes my hypotenuse. I have the hypotenuse, I have the perpendicular, I have the base. AC square, मुझे hypotenuse square find करना है, right? So here I'm using I should be using the Pythagoras theorem, and I should say that this is h square, which is equals to b square plus p square. ऐसे ही है? Yes. ठीक है, अब what is h? It's AC the whole square, and this is what they are asking us. B square is a 5 root 2 the whole squared, and then perpendicular is 9 root 3 the whole squared. ठीक है, so give me the answer. Now I'm getting 293. Yes, Umema. Yeah, I'm also getting 293.
Okay, so I have a 293, which is AC the whole square. So this is going to be 293 and it's AC the whole square, which is a 293. So what actually अगर उन्होंने AC पूछा होता तो फिर हम क्या करते? We would have said that this is square root of 293, isn't it so? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर प्लस और माइनस के साथ आता है, बट देन हियर बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द साइड लेंथ इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव, सो आई जस्ट राइट द आंसर एज AC which is equals to square root of 293. ठीक है, that is only if they would have asked for AC. They haven't, so I'm not going to do this step. Up till here it's okay. ठीक है, now is it okay, Claire? Yes. Right. Yeah. Second part, find the value of tan x. And you have to give the answer in the form a root 6 by b, where a, b are integers. मतलब हमें इसको simplify भी करना है. How to do that? What is tan of x? X यहाँ पर है. ठीक है, this is your x value. X value यहाँ पर है. First thing to know here is कि trigonometric ratios अगर हम करते हैं तो आपके पास tan of x is the ratio for perpendicular and hypotenuse. ऐसे ही है? Sorry, not hypotenuse, it's the base. It's the ratio for perpendicular over base. Is that so? Yes. Okay. So what is your perpendicular? What is the length of the perpendicular? 9 root 3. What is the length of the base? 5 root 2. Right? Is that so? Yes. अब यहाँ पे what we do here is, what we need to understand here is कि जब हम किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे और अगर डिनोमिनेटर में you are having a square root, like I can see this square root 2 here, so we are never going to leave the answer with the denominator in terms of a square root. We need to rationalize it. Rationalize करने का क्या मतलब है? Rationalize करने का मतलब है कि हम denominator से square root को हटा दें, eliminate कर दें. How to do that? You need to multiply and divide by square root of 2. ठीक है, हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective is कि हम इस square root को eliminate कर दें. So what I will be doing here is I will be rationalizing it. ठीक है, अब rationalize किस तरह से किया जाता है? Just multiply and divide by the same number. ठीक है, और ये क्यों किया? We have done this because root 2 into root 2 will give me just a 2, right? So here I can say that tan of x is going to be equal to 9 root 6 root 3 times root 2, that's a root 6, divided by 5 times 2. ठीक है, so obviously root 2 into root 2, that's just a 2. I have a 5 times 2 in the denominator, and I can say that this is going to be a 9 root 6 divided by a 10. This is going to be the tan x value. Is it in the form of a root 6 divided by b? Yes. Yes. So what is a? A is a 9. What is b? That's a 10 here. Okay, done. Any problem? Any problem? No. No. We know how to rationalize an equation. Yes. Okay. Now part C. Find the area. Part A भी कर लिया, B भी कर लिया. Now part C says find the area of the triangle. Again, write your answer in the form P root 6 over Q, where P and Q are integers. What is the area formula? Is your area equals half into base into height? Yes. Okay. What is my base length? What is 5 my root 2. 5 root 2? And what is my height? 9 root 3. 9 root 3. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या rationalize करने की जरूरत है? No. No. क्यों? Because if we multiply 5 root 2 into 9 root 3, we'll already have a root 6 upon a 2, so we'll get the answer easily.
हाँ, इसका रैशनलाइज इसलिए नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर में रूट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, रैशनलाइज सिर्फ कब किया जाता है, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो। यहाँ पे व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, दैट्स द डिनोमिनेटर। ऊपर वी हैव द न्यूमरेटर, राइट? दिस इज Yes. न्यूमरेटर एंड देन दिस इज आवर डिनोमिनेटर। सो रैशनलाइज सिर्फ हम उस वक्त करते हैं जब डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट की साइन हो। अगर नहीं है तो हमें रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन सिंपली सॉल्व द इक्वेशन, and when I solve it, I can say it's a 5 times 9, which is a 45 over 2, and this is going to be root 6. That's the answer. What is P? P is a 45. What is Q? That's just equals a 2 there. Is that okay? Yes. Chale, it's a cuboid which has a square base. What is a cuboid? What is a cuboid? Cuboid is a three-dimensional prism. ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकती हैं। बट यहाँ पे जो आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है, इट सेज दैट इट हैज अ स्क्वायर बेस। तो इसका मतलब है कि जो बेस है आपके पास इस क्यूबॉइड का, उसमें लेंथ और ब्रेथ दे नीड टू बी इक्वल। This is a cuboid, isn't it so? So because it has a square base, अब square base का क्या मतलब है? What do we have for square base? Square base का मतलब है कि आपके पास ये square base है। ठीक है, this is your base. This part, this makes the base here. ठीक है, so this is your base area. अब क्योंकि square है, तो obviously both these sides they need to be equal, L times L. But obviously क्योंकि cuboid है, तो इसकी जो height है that has to be different. ठीक, so this is the cuboid that you have here. It has a square base and the sides of the square are of length 1 plus root 2, meaning I can say that this is a 1 plus root 2 and the breadth is also a 1 plus root 2 centimeters. And the height of the cuboid, that is also given, it's a 5 minus root 2 centimeters here. So find the volume of the cuboid. How do I get the volume? We know that for the cuboid, the volume formula is length into breadth into height. ठीक है, अब ये क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, and what is this length into breadth? This is the base area. Always for prisms we have the volume which is equals to base area times the height. ठीक है, we have the base area which we have the base here which is a square, so I can simply say that this volume needs to be L square times H. Any problem? No. No. So L square is going to be 1 plus root 2 the whole squared times the height, which is a 5 minus root 2. Okay? So what is the first thing that you are going to do here? We'll open the brackets by using the identity. Identity 1 plus root 2 the whole square. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर identity apply करेंगे. So what is that going to be? Give me the answer for 1 plus root 2 the whole square. It will be 3 plus root 2. Right. 3 plus? Root 2. नहीं. 2 root 2. 2 root 2. 3 plus 2 root 2. ठीक है? 3 plus 2 root 2 and then I have a 5 minus root 2 here. ठीक है? अब क्या करेंगे? We need to expand it. So it should be 3 times 5 minus root 2 and then plus 2 root 2 times 5 minus root 2. Correct? Yes. Yes. Well, so expand karo and give me the answer.
Ma'am, is it 11 plus 7 root 2? राइट, दिस इज 11 plus 7 √2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि Yeah. यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सो वी हैव टू गिव द यूनिट आल्सो, इट नीड्स टू बी अ सेंटीमीटर क्यूब। डन। Yeah. ठीक है।